मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है दिल्ली रियल एस्टेट, फॉलोइंग दिल्ली रियल एस्टेट, विच आई डोंट फील अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स इवन हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. साउथ दिल्ली हैज़ इट्स ओन नेम वेयर पीपल डोंट वांट टू लीव साउथ दिल्ली. बट अगर आप देखोगे वेस्ट दिल्ली के बहुत पार्ट्स हैं जो बहुत रिसेंटली डेवलप हुए हैं where the plot pricing is similar to South Delhi. You know, let's talk about South Delhi. जीके में आज आप एक फ्लैट 4 करोड़ का ले सकते हो, and then if you go to a nice society in Golf Course or Golf Extension Road, you may or may not find something really good for 5 crores or 4 crores, right? Because people... Golf Course Road to we could even skip at 5 crores. Yeah. But 5 crores में we could find something on Golf Course Extension. Yeah, and who would have imagined that you'll buy a flat for 5 crores on Golf Extension? That's because people have started appreciating community living. You know, in early 2000s, I was in college, and आजकल वो एक टर्म आ गया co-living spaces बोलते हैं. हम उसको कहते थे यार अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं. तो I was living in GK, this is early 2000s, right? And at that time you could see how the price escalated, like price was constantly appreciating in GK. Now I think people have started understanding कि यार सुबह 5 बजे उठ के इतने पैसे खर्च के सुबह 5 बजे उठ के पानी के लिए अगर आपने स्विच ऑन करना है और आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, why are we spending so much money? बच्चे पार्क में नहीं जा सकते, गाड़ी लेके जिम जाना पड़ता है, where also parking is a very big problem. There is no security. आप घर छोड़ के नहीं कहीं जा सकते. अगर especially if you're, let's say you're married and you don't even have a child, आप घर छोड़ के कहीं 5 दिन की छुट्टी पे नहीं जा सकते. constant anxiety होती है पीछे से कुछ हो ना जाए. That is why people have started appreciating community living, and not just the fact that it's gated, but because आप constantly you're in touch with people, you're meeting your neighbors, आप नीचे जाके कोई festivals celebrate कर सकते हो, होली celebrate कर सकते हो, जो जीके की या साउथ दिल्ली की गलियों में अब कोई नहीं करता, right? So these are the, I think perception change हो गया गुड़गांव का. वो change perception हो गया कि यार investment की तरफ से अब लोग नहीं देख रहे कि यार आप इतने पैसे खर्च रहे हो, क्या आप investment एक wise decision or not. People have started understanding life is much better in a society than living in a flat where there is no security, there are no amenities. There is literally like, if you're living in a society in Gurgaon, you can just call up someone कि आपको plumber की कोई issue हो, आधे घंटे से पहले आपके पास पहुंच. Call भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप से हो जाता है. ऐप से हो जाता है, मतलब that's what I meant. So things are constantly getting, changing and improving in society living. And if you really see, people are constantly moving into society. That's why these apartments, high-rise societies are getting sold out within minutes because people are wanting to live there. And हम घरों में ही रहे हैं पूरी ज़िंदगी, बट अगर मैं अपने फ्रेंड्स या किसी के पास जाता हूँ कम्युनिटी मतलब सोसाइटी में, सो इवन आई अप्रिशिएट द फैक्ट वो कभी भी घर छोड़ के जा रहे हैं. द किड्स आर वो अपने मतलब इतना उनको just go down, you don't need any supervision. There's no supervision. You can just send them down, they can play with their friends, and it's amazing. That's what I think is happening. आपको लगता है कि ऐसे imagine I am buying something on Bolpur Extension on SBR. I have an option, probably I could buy a high rise, a community, and or a plot. What do you feel, would plot pricing would appreciate more than buying a high-rise community, or it is just that ki end consumers should prefer buying a community product and investors should still consider buying a plot? I think historically plots always give you better. But options bhi to nahi the na sir. But historically, see, I'll tell you, this is the psychology, this is the trend change that has happened. अब लोग वो इन्वेस्टमेंट वाइज ही देखते हैं. उनको लगता है यार 20-30 साल है अपने प्राइम ईयर्स जीने के, क्या मैं अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करता रहूँगा? You have to live as well. So a lot of people, what they're doing is they're either moving out on rents. A lot of rental culture has started happening in Gurgaon. उनकी इन्वेस्टमेंट एक वाइज इन्वेस्टमेंट कहीं और होती है, लेकिन रहते सोसाइटी ये भी हो रहा है. बट a lot of people don't own anything, but they're still on rents, or they're looking forward to buying a flat. So a wise decision for you would be buying a plot? It depends. I mean, for investing, I think it depends. On what criteria? For investing, see, a lot of people are buying flats क्योंकि लगता है फ्लैट नहीं भी हुआ तो यार उसको कल रेंट पे दे सकते हैं, and we can move somewhere else. A lot of people have enough money parked on the side, वो प्लॉट खरीद लेते हैं. So I think it depends what you want. अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए सिर्फ तो क्या बेहतर रहता है? I think obviously historically if you see buying a plot is much better because land, especially where you're buying, also location wise. Because आप कहीं जाके खेत ले लोगे तो उसका तो पता नहीं है ना. अगर मैं गुड़गांव की रियल एस्टेट में कंपेयर करूं तो प्रॉपर्टीज ऑन बॉल्सपुर रोड हैव एप्रिशिएटेड मोर देन इवन प्लॉट्स.
अगर गुड़गांव रियल एस्टेट की अगर माइक्रो मार्केट या माइक्रो लाइक इन अर्ली 2000s आई थिंक अरालिया जब लॉन्च हुआ था लोगों को समझ नहीं आई थी क्योंकि गोल्फ कोर्स में तब गोल्फ कोर्स रोड ही नहीं प्रॉपरली बनी हुई थी, खड्डे थे वहाँ पर। 2010 तक नहीं बनी थी, 15 अभी 18 में बनी है। हाँ, क्योंकि हमें याद है गोल्फ कोर्स रोड का तो कोई नामो निशान नहीं होता था तब कि क्या बनेगा किसी को पता नहीं होता था। At that time, yeah, Aralia's, I think someone must have bought it for 1.5, 2 crores. Now it's for 20. So the appreciation is there. But same way, I mean, even certain plots have appreciated a lot. So it depends. जैसे अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, which is very interesting to me, is that people who are still living in Gurgaon, probably investing, buying something on Golf Course Road, and still considering कि extension road पीछे है, दूर है, समझ नहीं आ रहा ना, देखने आते हैं. I have seen in last 6-7 months कुछ malls बने हैं where people have been attracted towards it, but उसके अलावा कोई reason नहीं था उन लोगों को ये नए areas explore करने का. और अभी तक जो even you would agree to me on this कि जो road widening हो रही है, which is probably bigger than Golfpur Road also, after that I believe the perception for everybody would change in that area, because it would be similar to the length of what we see of NH8 as of now. That is what it is scheduled to become. I think जितने ज़्यादा खड्डे होते हैं ना सड़कों पर उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की उस टाइम, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे जो खड्डे थे पहले अब वो कुछ और बन गया है. एक्सटेंशन रोड कोई पूछता भी नहीं था, राइट? और मुझे खुद 4-5 साल consistently I've been coming to Golf Course Road, Extension Road, and now I've seen how it has changed. So I think it's a trend. I think trends change. एक टाइम गोल्फ कोर्स रोड को नहीं पूछता था, अब सारे गोल्फ कोर्स रोड को पूछते हैं. हो सकता है कुछ समथिंग बेटर इज कमिंग समवेयर एल्स. बट जैसे अभी भी कंपैरिजन होता है कि एक्सटेंशन रोड वुड बी वेस्ट दिल्ली एंड गोल्फ कोर्स रोड इज साउथ दिल्ली. यू फील दिस परसेप्शन वुड बी देयर इन गुड़गांव रियल एस्टेट? आई डोंट नो, लेट्स सी, द टाइम विल टेल. बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि सिमिलर प्राइस प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. बेल एंड सिचना इज आर्बर, सिमिलर प्राइस, एंड ऑल द टिकट साइज विच इज कमिंग. Even Abroy is coming into the market, and there are more credible players, listed players, which are there coming to Golfpur Extension Road, even in this fiscal year for that matter. I think थी वो micro market में in next quarter or 2 quarters. A lot of these builders are coming to Gurgaon because they see कि लोग पैसे देने को ready हैं. Not just Gurgaon में, I mean बाहर से कितना, I mean a lot of investors are investing. वो not even in India, the NRI investors are investing in Gurgaon because उनको हर builder को एक businessman को opportunity है कि they can make a lot of money because there is a lot of people who are willing to pay that price. And if you see the consumer behavior in Gurgaon, not just real estate, if you really go to any mall, any market, you can really literally see money in the air because everyone is spending. And affordables के बाहर जितने का flat नहीं होता उतने की गाड़ी होती है लोगों के बाहर. This is something that I've noticed, that affordable is, I don't know if affordable housing will be affordable anymore. ठीक है ना, 25 लाख रुपए का फ्लैट उधर, 20 लाख रुपए की गाड़ी होती है बाहर. So people are willing to spend in Gurgaon. जो the biggest difference which I have seen in most of the investors who invest in Gurgaon, देखते ही नहीं, जाते हैं, जो ब्रोकर बोलता है, कंपनी वाले बोलते हैं, समझ आता है, वहाँ रश होता है, देखते हैं 4 लोग खरीद रहे हैं और उसे देख के ले लेते हैं. ज़्यादा अपनी रेकी कीड़ी whatever, like we talk about real estate a lot, nobody I've seen 90% don't go the extra mile. It's exactly like buying a stock. आपको स्टॉक के बारे में कुछ पता नहीं होता, कंपनी की बैलेंस शीट का कुछ पता नहीं होता, and then you end up buying basis on suggestion. और जैसे हमने बात करी थी कि आपके कोई फ्रेंड ने पैसे कमा लिए किसी फ्लैट लेके, blind buys. So it is happens, and it's a phenomenon is happening, and it will continue, and it's good for the market. You're getting buyers from everywhere. See, some will make money, some will lose, but that's how they'll learn. But sir, I meet a lot of people जिनके अगर property रुक गई है और वो they're still paying EMIs, that takes a toll in their life. कि आज ना तो अपना घर में they are paying rental, plus they are paying an EMI. But they are not able to sustain the lifestyle which these guys thought that probably after 5 years these guys would be able to. Yeah. और rental भी बढ़ गए हैं गुड़गांव में. I think rentals are going to keep increasing. I don't think, because this is a very interesting topic. Yeah. We had a discussion about rental कि क्या future है and residential for that matter. पहले तो I would want your take on something which is very popular nowadays कि 60 गज 120 गज, इसके
प्लॉट्स बिकते हैं एंड वेयर दिस गाइस से कि यहाँ पे आप फ्लोर बना लो और रेंट आउट करो, यू वुड गेट अ 5-6% ROI. You feel this concept is better, or probably when I would compare myself, I was making a discussion to myself that probably affordables is still better क्योंकि वहाँ पे आपको 3 BHK मिलता है. The pricing appreciation possibility is so high as compared to a plot, and even you guys would have to take care of the maintenance and everything by yourselves. और रेंट आउट होता है नहीं होता, आपको 4 प्लॉट किराए पे चढ़ा के मेंटेन भी करने हैं. But still people are buying a lot of these smaller size plots thinking that these guys will be able to make a rental yield of 5-6%. Yeah, I think it will work here if they're making 5-6% out of, and especially जब उनको land मिल जाता है, land लेके जो floors बना रहे हैं, obviously I think it's interesting. And But let's see. Is it a better concept than affordables, or buying land is better? I think depends on your level of patience and how much time you can give to your real estate. जितना मैंने देखा है 60-100 गज 120 गज में, even in this rally the plot prices for those plots have appreciated not to that extent जो earlier वो एक प्रीमियम में मिलते थे. तो आज सस्ते हैं as compared to 3 years. ये वही प्लॉट? हाँ जी, प्लॉट्स जो छोटे हैं 60 गज 100 गज 120 गज वाले, टू द एक्सटेंट 500 स्क्वायर यार्ड्स में जो एप्रिसिएशन आई है वो छोटे प्लॉट्स में नहीं आई है. ये छोटे प्लॉट्स पहले भी महंगे बिकते थे, वो कभी भी सस्ते मिलते नहीं थे क्योंकि एवरीबडी डज दैट मैथ्स की 5-6% छोटे 60 गज के प्लॉट्स और WS के होते हैं. और अफोर्डेबल में क्या एप्रिसिएशन आई है? अफोर्डेबल, एनी अफोर्डेबल विच इज देयर रेडी टू मूव इन, अगर कोई ढंग के बिल्डर का है नॉर्मल, अगर I have made a video where I've categorized all the good developers. अगर tier 3 का भी है तो भी it has doubled. But tell me one thing, अब अफोर्डेबल्स अगर किसी ने लेना है वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम ले सकता है, और वो भी चांस की बात है अगर निकले या ना निकले एट द इनिशियल प्राइस.